exchange chromatography. What is ion exchange chromatography? Ion exchange chromatography is a process that allows the separation of ion and polar molecule based on their affinity to the ion exchanger. It can be used for almost any kind of charged molecule, including large proteins, small nucleotides, and amino acids. Principle: it is based on the reversible electrostatic interaction of ion with this a separation matrix. This separation occurs by reversible exchange of ion between the ion present in the solution and those present in the ion exchange region. Then there is classification of region. According to the chemical nature, they classify as strong cation exchange region, weak cation exchange region, strong anion exchange region, and weak anion exchange regions. Nature of regions. Natural regions: cation, zeolite, clay, anion, and dolomites. Synthetic regions are inorganic and organic regions. Organic regions are polymeric region matrix, polystyrene, a site of ion exchangeable functional group, divine, divinely benzene, cross-linking agent offers stability. Then ion exchange region should have following requirements. That an ion exchange should follow following requirements to be an ion exchange region. It must be chemically stable. It should be insoluble in it should be insoluble in common solvent. It should have a sufficient degree of cross-linking. This swallow this swallow region must be denser than water. It must contain sufficient number of ion exchange groups. Then physical properties of ion exchange region. Cross-linking. It is the most important that if there is no cross-linking, there will be no ion exchange. It affects swelling and strength and stability. Swelling. When regions swell, polymer chain separates apart. Polar solvents swelling. Non-polar solvents contraction. Solving. Swelling also affects electrolyte concentration. Then there is particle size and prosperity. Increase in surface area and decrease in particle size will increase the rate of exchange. Ion exchange. Regeneration. Cation exchange regions are regenerated by tre- treatment with acid, then washing with water. Anion exchange regions are regenerated by treatment with NaOH, then washing with water until neutral. Experimental setup of ion exchange chromatography. This is the experimental setup for ion exchange chromatography. Here we can say that elution, sand, glass wool. Glass wool is used to contain the solution inside. Ion exchange region is filled in the tube. There is an other example of ion exchange chromatography system that is called Metron 850 ion exchange chromatography system. Instrumentation of ion exchange chromatography. Now Aftab will continue from this point. Uh, Instrumentation of ion exchange chromatography. First of all, we have see that eluent is added and it pump into a chimney and suppressor and then trace detector. What is elution? The process of extracting a substance that is absorbed to another by washing it with a solvent. In which elution, two things is used, eluent and eluate. The substance used as a solvent in elution eluate the solution of the solvent and the substance that was absorbed to another. Practical requirements during performance which these we required columns and packing the column. First of all, column glass, stainless steel or polymers. A packing of the column.
Wet packing method, a slurry is prepared of the eluent with the stationary phase powder and then carefully poured into the column. Care must be taken to avoid air bubble. कह रहे जब भी हमने पैकिंग करनी है कॉलम्स की तो सबसे पहले हमने उसका स्लरी पेस्ट बनाना है, उसके बाद उसको हमने कॉलम के अंदर ऐड करना है और ड्यूरिंग ऐड करने के दौरान इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें बबल्स ना बने. नेक्स्ट, application of the sample. After packing, sample is added to the top of the stationary phase. Use syringe or pipette. कह रहे हैं सबसे पहले हमने उसको जब हमने पैकिंग कर लेनी है कॉलम की तो उसको हमने ऐड करना है टॉप ऑफ द स्टेशनरी फेज. उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं syringe या pipette. This layer is usually topped with a small layer of sand or with cotton or glass wool to protect the shape of the organic layer from the velocity of newly added eluent. कह रहा है जब हमने उसको ऐड करना है तो हम उसको कॉटन से या ग्लास वूल से उसको प्रोटेक्ट करना है ताकि ऑर्गेनिक लेयर है प्रॉपरली ये बन सके. मोबाइल फेज, एसिड अल्कलीज बुफर. स्टेशनरी फेज, द आयनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ द कैटायनिक स्पीशीज जिनके ऊपर एम पॉजिटिव एंड द एनायनिक स्पीशीज एंड बी नेगेटिव. प्लीज नेक्स्ट. Illusion. Components of mixture separate and moved on the column at different rates depending upon the affinity of the ion exchanger. कह रहे ये मूवमेंट ऑफ आयंस ये डिपेंड करता है उसकी अफिनिटी पे. जितनी जितनी ज्यादा अफिनिटी होगी उतनी ही ज्यादा मूवमेंट करेगा. द एलिवेट्स आर कलेक्टेड एट डिफरेंट स्टेज और उनको डिफरेंट स्टेज पर हम कलेक्ट कर सकते हैं. एनालिसिस ऑफ द एलिवेट, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक, फ्लेम फोटोमेट्रिक, पोलरग्राफिक और कंडक्टोमेट्रिक. किस तरह हम एलिवेट को एनालिसिस कर सकते हैं, ये डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स हैं. सबसे पहले हमारे पास एक कॉलम दिखाया गया उसके ऊपर जो है आप कह सकते हैं पिंक कलर है जो मोर हाईली चार्ज मॉलिक्यूल्स आर मोर टाइटली बाउंड टू द रेजिन एंड सो ट्रेवल स्लोली एंड आर एलिवेटेड लेटर. ये जो सबसे ऊपर है ये हमारे पास मोर हाईली चार्ज पार्टिकल्स हैं और ये सबसे बाद में जो है ना एलिवेट होते हैं. और उसके बाद जो ब्लू कलर में है moderately charged molecules equilibrating between the resin and the moving buffer more readily. और जो ऑरेंज कलर में लेस चार्ज मॉलिक्यूल्स बाइंड लेस स्ट्रांगली टू द रेजिन, इक्विलिब्रेट विद द मूविंग बफर मोर रेडिली एंड सो ट्रेवल रैपिडली एंड आर एलिवेटेड सूनर. और ये सबसे जल्दी जो एलिवेट हो जाते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग आयन एक्सचेंज सेपरेशन. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आयन एक्सचेंज सेपरेशन को. नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन. क्रॉस लिंकिंग एंड स्वेलिंग इज important. If more cross linking, they are more rigid, but swelling is less. कह रहा है अगर more cross linking होगी तो वो ज्यादा हार्ड होंगे और उसके दौरान जो है swelling less होगी. अगर swell less करते हैं separation of ions of different size is difficult. कह रहा है उस दौरान हमें separation के लिए भी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा. नेक्स्ट. Nature of exchange ions, valency of ions, size of ions, polarizability, concentration of solution, concentration and charge of ions. ये सब उसकी इसकी exchanging of ions की natures हैं. pH of the mobile phase, ionic strength, mobile phase modifiers and temperature. Next. Working principle. कौन सा प्रिंसिपल इसके ऊपर वर्क कर रहा होता है. द बेसिक process of chromatography using ion exchange can be represented in 4 steps. सबसे पहले हमारे पास equilibration, sample application and wash, and elution and regeneration. Please next. Equilibration. The first step is the equilibration of the stationary phase to the desired start condition. When equilibration is reached, all stationary phase charge groups are associated with exchange counter ions such as chloride or sodium as shown by the blue counter ions and red stationary phase groups ions. आप देख सकते हैं कि जैसे कि ग्राफ में भी दिखाया गया और ये जो हमारे पास ब्लू लाइंस है ये काउंटर आयंस को शो कर रही हैं और जो हमारे पास रेड है ये स्टेशनरी फेज को शो कर रहा है. प्लीज नेक्स्ट. सैंपल एप्लीकेशन एंड वॉश. और सैंपल जो हम यूज कर रहे हैं उसकी एप्लीकेशन और उसको वॉश करना है. द सेकंड स्टेप इज सैंपल एप्लीकेशन एंड वॉश. द गोल इन दिस is to bind the target molecules and wash out all unbounded materials. The sample buffer should have the same pH and ionic strength as the buffer in order to bind all
separately charged proteins. Please next. Now I would like to call Sabir Raza. Please continue the presentation of ion exchange chromatograph. Assalamu alaikum. My topic is illusion. In this step, biomolecules are released from ion exchanger by a change in buffer composition. A common way is to increase the ionic strength with sodium chloride or another sample salt in order to deabsorb the bound proteins are destroyed are dissolved relative to the number of charged group on their surface. तो इसमें ये कहता है कि बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो रिलीज होते हैं आयन एक्सचेंजर से बाय द चेंज इन बफर कंपोजिशन जब आप बफर कंपोजिशन की जो है बफर की जो है कंपोजिशन चेंज करेंगे तो उसकी आयनिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी नेक्स्ट वन प्लीज Regeneration: The final step, regeneration, removes all molecules still bound. This ensures that the full capacity of stationary phase is available for the next run. Next, please. Application: Softening and determination of water. यानी वाटर को सॉफ्ट करता है और वाटर को जो है प्योर करता है. For extraction of enzymes from tissues, टिश्यूज में जो एंजाइम्स हैं उनको निकालता है. प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस फ्रॉम फ्री फ्रॉम आयनिक इम्प्योरिटीज को हटाता है. सेपरेशन ऑफ आयनिक इनऑर्गेनिक आयंस, separation of sugars, amino acids, and proteins. Ion exchange column in HPLC. HPLC means high performance liquid chromatograph.